What's up, everyone? Praful here. Welcome back, and thanks for joining in. It again, long time no see from my side, but I was a bit busy in developing a lot of stuff, trading related and otherwise, and had a good productive last couple of months for me. Financial year खत्म हो चुका है, and I just wanted to come over here and talk about how my financial year went trading wise. ठीक है? बाकी personal life and non trading life के बारे में यहाँ पे इस channel पे तो बता नहीं सकता, but let's talk about trading. We'll use the metrics, कितना PNL आया, drawdown क्या रहा, and all the regular stuff. And along with those normal metrics, I also want to talk about few other things which are kind of soft side of trading, not exactly the hardcore metrics, but the psychological side, the emotional side of trading, and what I went through over the last 1 year. And also we're going to talk about what would be my plan going forward. So end तक देखने को try करो, थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है video, but bear with me. So first things first, financially 2023 has been the best year for me so far. Like when I say 2023, April 2023 से लेके March 31st 2024 तक. So this has been the best year financially, earnings wise, and how much I made, and all the financial metrics, like I kind of aced them. जो भी targets रखा था सारे meet हो चुके हैं. And I'm going to show you like how my trading account did, because like I have, as you guys know, I have other sources of income as well. Let me know in the comment section if you want me to talk about my other sources of income and how I manage those other businesses. But in this video, this video will be limited to my trading performance. So just to give you the glimpse of the metrics, the numbers, the account started with a margin of 1.2 CR on 1st April 2023, and I generated a returns of somewhere around 89.47 lakhs, 89.47 lakhs net बोल रहा हूँ मैं, and the gross was 1.04 crores, that is 104 lakhs. अगर gross के तौर पे अगर returns calculate करते हैं तो it's somewhere around 85%, but net अगर return calculate करते हैं तो it is somewhere around 74.5%, 75% समझ लो. And the max drawdown has been around 3.2%. अगर आप last year का P&L देखोगे तो वहां पे भी मेरा drawdown इतना ही था, इस बार भी drawdown इतना ही है. And I've had 7 days where my loss has been more than 1% of my account size. Now, to be honest, it's not such a great year for an option seller. Why? Because last year भी मेरा somewhere around 75 to 80% के बीच ही ROI था, and drawdown भी इतना ही था. But last financial year we had only one expiry, and दूसरा expiry वो भी आधे साल के बाद आ गया. But this year, post September or October, in the second half of this year, we almost had 5 expiries. So considering the fact that I trade decently well on expiries, I should have been able to make a lot more money than this. But with growing zero DT frenzy, with growing craze for expiry day zero DT options, the markets started materializing some other risks which we hadn't calculated before. For example, a couple of times the broker went down. तो उस दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, सडनली ब्रोकर बंद पड़ गया, अडेप्टर का इशू आ गया, एंड देन सडनली आई हैड टू एग्जिट, आई कुडंट एग्जिट, एंड देन आई लॉस्ट अराउंड 4 lakh rupees on that day, which is close to around 2.5% of capital. But I could get back some money from the zerodha ने थोड़ा बहुत रिफंड भी किया, एंड दूसरे अकाउंट में मैंने कुछ काउंटर पोजीशंस लेके उसको कवर भी किया था. But that was kind of a traumatizing day. And also on the other day, मेरा सिर्फ 10% size था mid cap nifty पे. Just on 10% size, I lost around 1%. So if I was trading around full size, I would have lost around 6-7% आराम से उस दिन चला जाता. And then there was another day where bank nifty moved 400 points up and 400 points down in the last 15 minutes of the closing. तो 315 के बाद मार्केट में 400 पॉइंट गिरा और 400 पॉइंट ऊपर गया. 1 rupee option went to 400, and then it closed at zero. So all these kinds of risks they started opening up because of the flows. ठीक है? Because जब बहुत सारे लोग एक ही तरीके का ट्रेडिंग करते हैं, then the market becomes predictable. So it all comes down to who gets the first exit, who gets the better exit. So स्पाइक्स काफी ज्यादा हो चुका है. हमारा ट्विटर पे, फिन ट्वीट पे इसको बोलते हैं इंजेक्शंस. तो इंजेक्शंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. इंजेक्शन मतलब क्या है? एक शार्प 2 रुपए का ऑप्शन 25 पहुंचता है, अगले नेक्स्ट एक कैंडल में वापस 2 रुपए भी आ जाता है. 10 रुपए का ऑप्शन 100 पहुंचता है, 100 के बाद वापस फिर से 10 आ जाता है विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल. सो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दोस स्पाइक्स दे आर कॉल्ड द इंजेक्शंस. मतलब हम ट्विटर पे बोलते हैं कि आज इंजेक्शन लगी क्या, आज इंजेक्शन आया कि नहीं आया. सो दिस इज द लिंगो, दिस इज द न्यू लिंगो दैट फिन ट्वीट स्टार्टेड कमिंग अप विद बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट्स. बट 74% is not bad considering the kind of size I was pushing over the last 4-5 months, because जब बड़ा size पे trade किया जाता है, then we have to think about a lot of other stuff apart from the candles, apart from the basic price action, and apart from, we have to think about the fills, you have to think about the thickness and thinness of the order book, you have to think about whether liquidity crunch हो रहा है कि नहीं, and you have to think if your own orders cannibalize your other orders. So ये सब बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है when you are trading big size. So in spite of trading a lot bigger size than what I'm showing in this account, I was able to replicate these numbers, which I would consider not a shabby outcome. But when I compare option selling, when I compare expiry trading of 2021 or 2022, and then I compare FI 2023 and first 3 months of 2024, the level of the game has suddenly shot up through the roof. मतलब आप बेसिक्स समझ के, आप बेसिक्स पढ़ के आके यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. You're in it for a disappoint. And हाँ, before I forget, a lot of you guys have been commenting and asking me on the Twitter, Instagram पे भी पूछ रहे हो कि when is the next batch. As I've mentioned multiple times, my next batch is only going to be post elections. Elections के बाद ही होगा, because उस point of time तक options का behavior होने दो and VIX का behavior होने दो, काफी erratic रहेगा. Even if you learn to handle these kinds of moves, it's not going to be of any use to you guys. तो मेरा जो next batch है वो elections के बाद ही होगा, and I'm going to keep you posted on that. तो जितना सही से मैं ट्रेड कर रहा था उसके हिसाब से I've done fairly well, and especially जो लोग ट्रेड करते हैं, for them 2023 and 24 this financial year has one of the toughest. मतलब लोग बहुत unprecedented moves, 3 sigma 4 sigma moves झेले हैं मार्केट में. तो मार्केट has exposed them to all sorts of risk that there possibly were. So it hasn't been an easy year for any kind of trader. मतलब V shape reversals तो इतना कॉमन हो चुका है कि पहले दिन में एक V shape reversal आता तो लोग पागल हो जाते थे, अब आधा घंटे में V shape आके फिर से कंटिन्यू कर देता है. So lot of volatility, especially on expiry days. So it hasn't been an easy ride, but even after that I've been able to survive. So I'd not be too overcritical about my performance, and I take it as a win here. So going forward,
गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शंस आ रहा है, अगले 2 महीना थोड़ा केयरफुल रहो, साइज कम ट्रेड करो, पैसे नहीं बने फिर भी ठीक है, बट हाथ से पैसे नहीं जाना चाहिए। कंट्रोल योर रिस्क। अगर आप 2% 3% रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हैं अभी तक, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स रिड्यूस दैट रिस्क टू 1%। मतलब जिस दिन 1% आपका लॉस जा रहा है, कट द पोजीशन। इफ यू आर ट्रेडिंग विद 2% रिस्क, कट इट टू 1%। इफ यू आर ट्रेडिंग विद 1% रिस्क, कट इट टू 0.5%। बेसिकली आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसको आधा कर दो, डजंट मैटर, ठीक है। द मार्केट्स आर हियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दे वर हियर बिफोर यू वर बोर्न, दे आर गोना बी हियर इवन आफ्टर यू आर डेड। सो लेट्स नॉट ट्राई टू मेक मनी इन अ हरी, ठीक है। पैसा बनाने का वक्त आएगा ही आएगा। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट हाउ मच ऑफ द मनी दैट वी मेक we keep it to ourselves without giving back to the markets. Now, coming back to my previous year's performance, there are certain things which I want you guys to understand. I'm not too happy about my numbers, but one thing I'm definitely proud of is me showing up every single day. मैंने हर रोज 6.5 घंटे मार्केट के सामने बैठा हूँ, इसी स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, एंड आई हैव गिवन माय एंटायर स्क्रीन टाइम फॉर ऑल द ट्रेडिंग डेज। आप जाके फिर से कंसोल चेक करो, देयर हैजंट बीन अ सिंगल डे वेयर आई हैव मिस्ड ट्रेडिंग। हर रोज मैं आके ट्रेड करता हूँ। यस, अल्गो ट्रेडर्स होते तो या लाइक यू कैन जस्ट ट्रिगर एंड यू कैन से दैट हाँ मेरा काम हो गया, बट एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर आई हैव गिवन माय फुल टाइम, माय स्क्रीन टाइम, एंड आई हैव गिवन माय 100% एंड आई हैव शोन अप एवरी सिंगल डे, व्हिच हैज बीन a game changer here, because कभी-कभी लगता है कि बड़ा लॉस के बाद मेरे को लगता है कि हाँ एक ब्रेक लेना चाहिए, but the next day I tell myself no, consistency is what matters। हाँ आज डकआउट हो गया तो how do you know that next match भी डकआउट होंगे? Next match can be a century, right? So every single day I've come and I have put on the trades and I've shown the consistency, and this is something which nobody can take away from me, which is something which I'm truly proud of. I may be content with my numbers, I might not be content with my numbers. I thought that there's a scope for improvement and all that, but when it comes to consistency, I've given my 100% and I take 100% pride in that. ठीक है। सो इफ at all you guys need to take something from this, one is the smoothness of the equity curve। so one is the smoothness of the equity curve, मतलब 75% रिटर्न के लिए 3% का ड्रॉडाउन, which I consider is a very decent return, like 20-25 का कैलमर बैठता है, तो उतना हाई कैलमर पे ट्रेड करना which I consider is a decent thing। and the second thing is that no matter what happens, show up the next day, and I've tried to tweak my systems, I've tried to tweak my strategies, and I've tried to tweak my approach based on the changing market dynamics। मेरे algos भी वैसे मैंने tweak किया है, and I've come up with some new systems, and now what I've noticed over the last 3-4 months is जितना पैसे एक्सपायरी में बन रहा है ना, और जितना मुश्किल से बन रहा है एक्सपायरी में, उससे आसान तरीके से पैसे 1DT एंड 2DTs में बन रहा है। सो इफ यू आर समवन हु डजंट ट्रेड विद बिग साइज, मतलब 15-20 करोड़ से तो आप नहीं ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट 1 करोड़ के बिलो ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको लिक्विडिटी का भी इशू नहीं आने वाला है। यू कैन इजीली ट्रेड 1DTs एंड 2DTs, एंड वहां पे बहुत आसान से पैसे बन रहा है। वहां पे ऐसे स्पाइक्स, इंजेक्शंस, एराटिक गामा ब्लास्ट, ऐसे नहीं लिक्विडिटी कैस्केड्स, ये सारी चीज नहीं है वहां पे, एंड वहां पे अच्छे से पैसे बन रहा है। बट मेरे को लिक्विडिटी चाहिए एंड आई एम काइंड ऑफ फोर्स्ड टू ट्रेड एक्सपायरीज। बट इफ यू आर समवन हु इज ट्रेडिंग प्योर शॉर्ट वॉल, आई सजेस्ट यू स्टिक टू 1DTs। वहां पे ज्यादा शांति से पैसे बन रहा है, एंड वहां पे ज्यादा आसानी से पैसे बन रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट मेरा एक दूसरा बुक चलता है जो पोजिशनल पे चलता है, वीकली ऑप्शंस एंड मंथली ऑप्शंस चलता है वहां पे, एंड दैट हैज आल्सो बीन डूइंग क्वाइट वेल, बिकॉज़ इंट्राडे में वोलेटिलिटी आ रही है, बट पोजिशनल काफी अच्छे से शांति से पैसे दे रही है। सो आई गेस द आइडिया इज टू डाइवर्सिफाई, जितना होता है उतना डाइवर्सिफाई करो, अलग-अलग चीजों पे ट्राई करो, एंड यू नेवर नो व्हाट सूट्स यू। अगर मुझे zerodha सूट होता है तो नॉट नेसेसरली इट हैज टू सूट यू। तो फाइंड योर थिंग, एंड एट द सेम टाइम डोंट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम एनीवन। मतलब सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, एंड व्हाटएवर मनी और व्हाटएवर एनर्जी और व्हाटएवर एफर्ट यू पुट इन टू लर्न एनीथिंग, इट्स नेवर गोना गो वेस्ट, ठीक है। इट्स व्हाट आई ट्रूली पर्सनली बिलीव। तो बात रही मेंटरशिप की, इलेक्शंस होने तक एक्सपेक्ट मत करिएगा बैच को प्लीज, एंड जो भी मैंने बात किया है वेरीफाइड पीएनएल ऑब्वियसली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जा सकते हैं, उसको आप डेटा को भी आप इंपोर्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन सा दिन क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, इफ देयर आर एनी इनकंसिस्टेंसी विद व्हाट आई एम टेलिंग एंड व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन। तो इनकंसिस्टेंसी 100% नहीं रहने वाला, यू कैन चेक इट, यू कैन वेरीफाई फॉर योरसेल्फ। अगेन आई एम रीआइटरेटिंग द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, इट्स जस्ट टू imbibe some sort of a confidence that consistency के साथ पैसे बनता है। So you don't have to be the smartest person in the room, and with just a bit of consistency and discipline पैसे तो बनता है। कितना बनता है, कितना ड्रॉडाउन से बनता है, कितना ज्यादा बनता है, कितना कम बनता है, that is a completely different topic altogether। So गेम को कैसे इंप्रूव करना है, मेट्रिक्स को कैसे इंप्रूव करना है, that comes with 1 experience, and 2 by taking help from someone who is already at a place which you want to aspire to be at। So and Q&A का वीडियो ऑलरेडी रेडी है, probably 2-3 दिन में मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। I hope you guys also had a fantastic financial year। आपका नंबर्स क्या है, let me know in the comment section। I read your comments, and at the same time अगर बहुत सारे profitable traders आके बोलते हैं कि हाँ भाई देखो मैं भी कमा रहा हूँ, मैं भी कमा रहा हूँ, that will kind of increase the confidence among the new budding traders, so they can, with a bit of extra confidence, they can look forward to taking this up as a legitimate career। On that note guys, I hope you guys had a good fantastic financial year, and I wish you guys a very successful and a very prosperous coming financial year, and मिलते हैं next video में। Till then, take care, bye bye।